ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कयास लगाना चाहते हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत है इस पर्टिकुलर एडिशन में, जिसको ख़ास तौर से हम बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट एज़ यूजुअल मौजूद है हमारे साथ। तो सबसे पहले अजय राठौर, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, बहुत-बहुत स्वागत है। इट्स थैंक यू। ऑलवेज़ अ प्लेज़र, क्योंकि इतने हम इकट्ठे काफ़ी सारे शोज़ कर लेते हैं, तो लास्ट शो मुझे हमेशा बहुत ख़ास लगता है। एंड वी हैव वी कृष्णा स्वामी। Thank you so much for joining us, senior sports journalist we have. थैंक यू। And I am Gitanjali Soni, and me and Praveen Soni are going to conduct this. यस। और जैसी उम्मीद थी कि हांगकांग थोड़ा फाइट करेगा, वैसे उन्होंने किया भी। और बाबर हयात ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, पावर प्ले में वो भारत से आगे थे। अजय राठौर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बाद? देखिए स्टार्ट तो थोड़ा सा ठीक था उनका, और बाबर हयात ने अच्छी बल्लेबाजी की, उनका थोड़ा साथ दिया किंचित शाह ने, बट उसके अलावा कोई भी ज़्यादा बल्लेबाज ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। फिर भी 150 प्लस स्कोर बनाया। ये 40 रन से ज़रूर हारे हांगकांग, बट फिर भी मैं कहूँगा इस टीम के लिए बहुत बुरा नहीं है। यस, ऑफ कोर्स दे वुड हैव डन बेटर, बट जिस तरह से उनका लेवल है, क्वालिफाई करके आए हैं। इंडिया जो बहुत अच्छी साइड है, आई थिंक डिसेंट शो पुट अप किया उन्होंने। Now, Swami, again, we have to call our caller first because I'm sure they would be having tons of questions. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है हमारा 23421084, 23421085। और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल करते हैं 011 लगाएंगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तब भी आपको 011 लगाना ज़रूरी है। एंड स्पेशली कई बार क्या होता है ना प्रवीण, जो हमारे इंग्लिश लवर्स होते हैं, मुझे कई बार ईमेल करके बोलते हैं आप शून्य क्यों बोलती हैं, तो भाई शून्य ज़ीरो। सो इफ़ यू आर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट इट, सो 23421084 एंड 23421085 इज़ द नंबर. So, Swami, now I'm really very much interested to know what's your complete synopsis about the game today. As a journalist, your best words, Forget dramatic about it. words, No, I little just think, controversial. as someone, apart from being a journalist, as someone who's watched cricket for a very long time, I would say, I mean, the Indian win was expected. I probably would have expected a slightly bigger margin, but that doesn't matter. But I am a bit disappointed with the two new young bowlers, Ashdeep and Avesh Khan. Both of them giving away 40 and 50 runs, and especially to an opposition like Hong Kong. So, which means to say that would have forced Captain Rohit Sharma to try out, say, Virat Kohli, and then things like that, to give him a one over in between somewhere to hide one of the main. I mean, these two boys are supposed to be part of a main bowling lineup. So I think that would be a little worrisome for him if he suddenly goes in with five bowlers, as India did today. So obviously we need to have a sixth bowler, and I'm sure you'll see Hardik back in the next match for sure. But also a few points lost for both Arshdeep and Avesh Khan today. अच्छा अजय, कि इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो मेरे जैसे जो नोवीस लोग हैं उनका ये था कि हो सकता है कि टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यही सोच के दे दिया कि चलो विराट विल आल्सो हैव अ चेंज, एज अ बॉलर एक वैरायटी आ जाएगी। बट क्या ये एक मोनोटनी तोड़ने के लिए भी होता है कई बार? जनरली मैच उस टाइम तक ख़त्म हो चुका था, और बहुत बहुत ही कम चांसेस थे हांगकांग के लिए। एक ओवर ज़रूर दिया, बट लाइक स्वामी सर सेड कि जो यंग पेसर्स ने, उन्होंने ऑलमोस्ट 97 रन्स खर्च किया 8 ओवर में, 152 में से टोटल। और भारतीय टीम के पास और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर भी नहीं है इस 15 के स्क्वाड में। तो आगे कमिंग मैचेस में जब सुपर 4 में और कॉम्पिटिटिव कंपटीशन ज़्यादा होगा, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच जो है पाकिस्तान से ही पहला पड़ेगा, तो यहाँ छठे बॉलर का तो ऑप्शन यस डेफिनेटली भारतीय टीम को चाहिए होगा, क्योंकि T20 में किसी ना किसी बॉलर की पिटाई भी होती है। बट आज जिस तरह से दोनों फास्ट बॉलर्स को रन्स लगे, वो अच्छे साइन नहीं थे भारतीय टीम के लिए। बट ठीक है, T20 है, कभी आप हर मैच में अच्छा नहीं करते। जडेजा का आज कहें अच्छे इकोनॉमिकल रहे। अभी तक ऑफ लेटली वो अपने 4 ओवर पूरे नहीं डाल रहे थे। बॉलिंग ऑलराउंडर या एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे थे, बट आज गेंदबाजी उन्होंने की और पावर प्ले में भी की। वो एक मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा साइन है भारतीय टीम के लिए, कमिंग मैचेस के लिए भी। जी, और हमारे लिए बहुत अच्छा साइन होता है, एकदम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सो देखते हैं क्या विचार है हमारे कॉलर्स के अभी। हेलो, जी नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। जी मैं सीतापुर से मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ। जी आरिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कहिए क्या कहना चाहेंगे? जी जी, सबसे पहले मैं आपको और तमाम सुनने वालों को मैं बधाई दे रहा हूँ कि आज इंडिया ने फिर दोबारा जीत दर्ज कर ली है। जी बहुत और बहुत खुशी बधाई। का ठिकाना नहीं है, और इंडिया ने बहुत अच्छा मैच खेला है।
जी। और और मैं दो प्रश्न यहाँ पे अजय रात्रा जी से करना चाहूंगा। पूछिए। नंबर ये कि जैसे हमारी ओपनिंग जोड़ी नहीं इस वक्त बढ़िया खेल पा रही है, तो इसके लिए अगर दूसरा कोई ऑप्शन हो सके तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। और दूसरा ये कि सूर्य कुमार यादव बहुत जबरदस्त खेलते हैं, तो इनको अगर 1 डाउन अगर भेजा जाए तो हो सकता है रन और भी ज्यादा हो सकते हैं। इसके ओके। बारे में जरा अजय जिसे पूछ सकते हैं आप। जी, ज़रूर। एक और कॉलर लेते हैं और उसके बाद हम ज़रूर अजय जी से सवाल पूछेंगे। प्रवीण, ये कॉलर लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। मैं नौजहां जिला हमीरपुर यूपी से शमीम अहमद बोल रहा हूँ। स्वागत है शमीम अहमद साहब आपका। जी, मैं अजय रात्रा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, ये अवैस खान जो ने बड़ी बेकार की बॉलिंग की थी, कि क्या इसने इससे अच्छा और किसी वाला को नहीं लिया जा सकता था इसमें, और किसी को चांस दे देते हैं? ठीक है, आपका सवाल हम अजय रात्रा से लेते हैं अभी आपसे। So, Ajay, 3 questions directly towards you. So, first question है कि भी ओपनिंग पेयर, अनदर ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा है कि सूर्य कुमार अगर 1 डाउन आते हैं तो कैसा रहेगा? और तीसरा तो आपने सुना ही है, बॉलिंग से खुश नहीं है ये। मैं एक एक करके लेता जी, हूँ मैं। तो आरिफ साहब, आई थिंक यस, ओपनर उतने अच्छे नहीं चल रहे, बट आप कई बार कहना मुश्किल है कि आज रोहित ने 13 बॉल में 21 रन बनाए, तो इसको हम क्या कहेंगे T20 क्रिकेट में। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है 21 रन, बट स्टार्ट के माध्यम से आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट देखें तो बेहतर था। यस, अब राहुल ने रन बनाए, रने बॉल कुछ 35 और रन, लेकिन रने बॉल था, स्ट्राइक उतना अच्छा नहीं था। मुझे लगता थोड़ा सा ये फॉर्म से हमारे टॉप 3 थे इस मैच से पहले देखें तो थोड़ा सा जूझ रहे थे, बट आज अच्छा साइन ये रहा कि नंबर 3 पे जो विराट कोहली, उन्होंने भी स्टार्ट थोड़ा सा नॉर्मल ही किया और उसके बाद अच्छे स्ट्राइक लगाए। मुझे लगता है इस टीम की प्रॉब्लम ये है कि टॉप 3 ही जो स्ट्रगल कर रहे थे इस मैच से पहले, वो तीनों इकट्ठे बैटिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि टीम में जब 6 बैट्समैन है, हर बैट्समैन रन नहीं बनाता, सारे फॉर्म में भी कई बार नहीं होते। आप चाहते हैं कि सारे फॉर्म में हों, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आज एक अच्छा साइन रहा कि विराट कोहली फॉर्म में आए हैं। राहुल ने कुछ 35 रन बनाए, होपफुली नेक्स्ट मैच में थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस आएगा और बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। अब आपने 3 नंबर का पूछा है, यही था नेक्स्ट जी। आई थिंक अगर विराट कोहली खेल रहे तो उनको ही 3 नंबर बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो काफ़ी स्ट्रोक मेकिंग उनका अच्छा है। जब इनिंग के एंड में होंगे, वो फिनिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है भारतीय टीम के लिए। अनलेस अगर ओपनिंग स्टार्ट कुछ 12-13 ओवर का मिल जाए तो यस, वो प्रमोट हो सकते हैं कि उनको 3 नंबर पे भेजा जाए। और एक तीसरा ये था कि ये जो आवेश आवेश खान है, उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं की, खुश नहीं है। देखिए, पहले तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि आपने जो उनकी क्रिटिसिज्म कहें या आपने उनको बुरा नहीं कहा, उनकी गेंदबाजी को कहा। तो देखिए, सबका दिन होता है। आज मैं भी उनकी गेंदबाजी से खुश नहीं हूँ, जिस तरह से बॉल दिए उन्होंने और काफ़ी महंगे 50 से ज़्यादा रन दिए। बट इस सीरीज़ की बात करें तो 15 के स्क्वाड में और फास्ट बॉलर्स है भी नहीं, तो भारतीय टीम को अगर 3 पेसर्स के साथ जाना है तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। और अच्छा है कि यंगस्टर्स को भी थोड़े मौके मिलने चाहिए। और इसके बाहर दीपक चहर ज़रूर हैं स्टैंड बाइज में, बट वो अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। So, Swami, this is actually a cause of concern for Indian team. I mean, if you see, then there is, especially for pacers, we don't have much of an option. So, what exactly do you think is needed to, maybe See, by the get very- more talent? The very nature of pace bowlers is that they are also pretty much injury prone. And also the thing is, it's not possible for you to continue for a long run of matches, We still have a few more matches to come. It's one days and all that. Right. So we have a few more games to come. So we will be testing out, and some of our pace bowlers are actually, playing all formats of cricket. So, there is going to be tremendous amount of pressure on them. And the World Cup, T20 World Cup is only later in the latter half of the year Right. in Australia. So, you need to have a set of fit fast bowlers. Not just fast bowlers, but fit fast bowlers. And you have to have a fair group of them. A group of, say, 5 or 6 or 6 or 7, from whom you can take them to the World Cup. So I think that probably was the reason why they took 2 youngsters, Arshdeep and Avesh. Unfortunately, today they didn't click too much. So I would say, we still have a lot of people coming back from rest or from injury and all those things. So I think it's just a process of trying to find who are the 5 bowlers that we can actually take with us to Australia. So I think that is the process which is currently
ongoing. So Okay. I think some concern, but I wouldn't say there's a big worry. All right. आविश खान और हर्षदीप ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पर अभी भी चहल जो है विकेटलेस है इस टूर्नामेंट में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज? या अगेन मैं वही कि हर गेंदबाज जो है विकेट डेली परफॉर्म नहीं करता, बल्लेबाज हर मैच में रन नहीं बनाता, बट इफ़ यू सी चहल की कि आज बहुत ज़्यादा रन कंसीड नहीं किया। आई थिंक 4 ओवर में कुछ 15 रन ही कंसीड किए, 18 रन। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी गेंदबाजी है। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं 192 रन, ठीक है विकेट नहीं भी लिया, बट अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो एक अच्छा परफॉर्मेंस है T20 के लिहाज से। देखिए, आविश खान और अर्शदीप की हम बात कर रहे थे, पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक रोल जो डिफाइन किया गया है हर खिलाड़ी के लिए, जैसे हर टीम के अंदर, तो क्या आविश खान और अर्शदीप को ये अब नहीं देखना चाहिए कि उनको ये रोल डिफाइन किया गया है? अगर स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं मगर इतने रन ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो वो नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कब बॉलिंग करेंगे, वो कप्तान डिसाइड करेगा कि उनकी ज़रूरत कब है, किस टाइम पर वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कि स्लॉग ओवर्स है या पावर प्ले है, कहाँ पर करेंगे, या फिर अगर किसी बॉलर जो चल नहीं रहा तो आपको 2 या 3 ओवर के लिए 1-2 बॉलर छुपाने हैं, तो किसी और को जो है 6 बॉलर को लाया जा सकता है कि नहीं। यदि आपके पास आज जैसे 6 बॉलर था नहीं, तो आपने कोशिश किया कि ठीक है विराट कोहली को अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई थोड़ा सा भी 1 या 2 ओवर दे के रखें, सो दैट हिज आर्म इज़ एक्चुअली टर्निंग अराउंड, सो दैट देर इज़ सडनली ये ना हो जाए कि बड़े मैच में पहली बारी अगर गेंद फेंकनी पड़ जाए तो उस जो है उसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मगर उससे पहले एक आध जो है ईजियर मैच में अगर थोड़ी सी उन्होंने बॉलिंग की तो देन ही कैन बी यूज्ड टू इट। दैट इज़ प्रॉब्ली द रीज़न वाई ही गॉट 1 ओवर देयर। So, but on the other hand, I think it is not a question of what is the role, कि आप शुरू में बॉल करेंगे या बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि if you are a prime bowler, if you are a front line bowler, then you should be ready to bowl whether it is the first or the 20th over. I think that you have to be completely ready for it. And I think today they did not come up to scratch, but I think overall I would say it is still, I think India still has a lot to look forward to. These are 2 youngsters. They will grow and they'll probably mature into much Clearly, better. even we have a lot to look forward to, as in we have a lot of callers. So another caller we have. Hello. मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मेरा नाम वाई वेंकट रेड्डी। वेंकट जी, वेलकम एक बार फिर आपका। कहिए इस बार क्या लेके आए हैं हमारे लिए? सेलेक्टरों के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जी आजकल नई नई तेज गेंदबाजों को सेलेक्ट कर रहे हैं, जी। बट इनकी उम्र 27-28 साल का हो रहे हैं। मेरे हिसाब से यंग पेस बॉलर्स को ट्राई किया जाना चाहिए। जी, कोई नाम है? आप क्या कहते हैं? आपके पास कोई नाम है यंग बॉलर्स के? शिवम मावी जी है, वो अच्छा बॉल कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा 2-3 पेस बॉलर्स ऐसे यंगस्टर्स हैं, इनको ट्राई करना चाहिए। इनके बारे में अजय रात्रा से मैं इनका कमेंट्स जानना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय रात्रा जी कमेंट देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मोहम्मद नईम मलिक मेरा नाम है मैडम। मलिक साहब आइए। जी, मुझे गेंदबाज से लेकर कुछ बात करनी थी। जो अवेश खान और अर्शदीप ने 8 ओवर में 90 से ज्यादा रन दिए हैं एक लूज टीम के खिलाफ, क्या हम शमी और बुमराह को नहीं खिला सकते? यही मेरा सवाल है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े मैच पे खेल रहे हैं सर, एक देश की ये सवाल है, एक देश की इज्जत है। ये छोटा देश नहीं है, ये कम से कम बड़ा देश है। ये हिंदुस्तान लोगों के इज्जत का सवाल है सर। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बुमराह इंजर्ड थे, इसलिए नहीं टीम में नहीं थे, और मोहम्मद शामी को टीम में नहीं लिया गया है। हम ये सवाल भी अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे। So again, Ajay, lot of questions for you. So be ready. I don't know why everybody is asking you only particular questions. Maybe they feel you're a cricketer, so you will That's be it. able He's to. a test cricketer. I know. I mean, just I have only gone to a test match. He played it. We have watched that test. So we are also again aiming at you. So first question, Venkat Reddy says young bowlers को try करना चाहिए। उन्होंने example नाम भी दिया है शिवम का। तो आपका क्या कहना है? नहीं try कर रहे young bowlers को ना? सो वेंकट जी आई थिंक ट्राई कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अर्शदीप भी यंग ही हैं, अभी थोड़ा टाइम पहले ही अंडर 19 खेले हैं। यस, 23 साल की, सिर्फ 22-23 साल। 22 सो वो भी यंग है। और शिवन मावी यस बहुत अच्छा मैं आई थिंक IPL में कर रहे हैं, बहुत फास्ट तेज गति के। बट गति के साथ मेरा ये मानना है, यस फास्ट बॉलिंग में पेस बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, बट उसके साथ स्किल भी। और ट्राई किए अभी जो
जम्मू कश्मीर से खेलते हैं उनको भी ट्राई किया मलिक लास्ट टूर पे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है नए बॉलर्स को ट्राई कर रहे हैं, बट एक एक करके ट्राई कर रहे हैं। आवेश ने आईपीएल में बहुत अच्छा किया, 27 साल में कहूँगा बहुत ज़्यादा एज नहीं है। बुमराह का सोनी साहब ने आपको बताया ही कि वो अभी इंजर्ड है। यस, शामी का मुझे भी लगता है कि अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में वो स्किल है, वो मैच्योरिटी है और प्रेशर सिचुएशन भी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो रूल्ड आउट नहीं होंगे T20 में भारतीय टीम के लिए। यस, अभी कोशिश ज़रूर की है कुछ नए गेंदबाजों को चांस देने की। अभी भी काफ़ी मैचेस हैं इस एशिया कप के बाद, 2 सीरीज़ T20 सीरीज़ बाकी हैं और वो भी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर जिनको चांस मिल रहा है वो परफॉर्म नहीं करते तो आई एम श्योर कि भारतीय टीम जो है उनकी तरफ भी रुख करेगी। जी बिल्कुल। और फिलहाल हम रुख करते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, देखते हैं कौन बनता है प्लेयर ऑफ द मैच। But we slightly slipped after 13 over and especially death overs. But I think I must say that the way Surya Kumar batted, it was good to watch. It's been quite a challenging last 4-5 months, right? You've been on the road and all the quarantine and lockdown. I mean, still, I mean, this must feel really good achieving what you have, and congratulations for that. But how do you take a tournament like this and what you've achieved? I think it was a big opportunity for all the boys, and I know we were away for a very long time, and boys were playing with injuries, but I think credit goes to them, and I'm really proud of them. Specific areas that you want to work on going forward in this tournament? You got a game left as well. Yes, I think we're gonna sit down tomorrow, and we will have a look at our death bowling. Today we slipped on there, and I'm sure that we will capitalize on that what we did wrong and improve on next game. All the very best for the next game and also rest of the tournament. Thank you. Well done. Thank you. Well, it's time now to invite Mr. Nishant Pitti to present the best catch of the match, the winner with a check of USD 3,000, and the award goes to Azaz Khan. A wonderful catch that was of Rohit of the bowling of Shukla. He does get a check of USD 3,000. And we'll have a look at that catch. That's a really, really good catch. Didn't really time it as well, but had to judge it really well. Azaz Khan, and that's the reason he gets the best catch of the match award. Moving on to the captain of the Indian side, Rohit Sharma, the winning captain, would request him to sign the match ball for Mr. Mohammad Farhan Idris on behalf of gold medal. And post that, if I can have a quick chat with you, Rohit. Congratulations for winning and qualifying for the Super Fours. A few boxes ticked tonight. Yeah, I think so. We batted pretty well to start with, and then got to a very good score at the end, and then came out and bowled reasonably well. I thought we could have done slightly better with the ball. Word on Surya. I mean, honestly, the kind of innings that he played today, the words will be short. So, but we have seen that with him every now and then he comes up with such kind of knocks. I mean, it's got to do with the confidence that he has at the moment, you know, and he just comes out and bat fearlessly, which is what the team expects from him. And some of the shots he played today, I mean, those shots are not written in the book, anywhere in the book. But it was very, very pleasing to watch from the outside, the way he played. The certain shot selection was also quite crucial, you know, and we know he can play all around the park, and that's exactly what he did today. Right, we saw flexibility in the batting order. Last game it was Jadeja who came at 4. This game Surya. Is that something that the team would be open to? Yeah, it is something that we want to keep in our minds, and we've also informed the group about this as well. Most of the guys are ready to take that opportunity and be ready to bat wherever the team is asking from them to bat, and I think that is the kind of flexibility we need. We can only talk about flexibility, but eventually, you know, you got to go out there and do it as well. And whenever we see an opportunity to do that, we won't be afraid to do it. We will take those chances, and wherever we see that there are right matchups, where we're going to try and use that. Well, congratulations again. Thanks for your time and all the best for the rest of the tournament. Thank you very much.
Rohit Sharma, the Indian captain. Well, now I would like to invite Mr. Ahmed Al-Haddad, the CEO of DP World, to present the Player of the Match award. He gets a check of USD 5,000 and a trophy, and that is Surya Kumar Yadav. 62 of 26 deliveries, unbeaten innings. The Surya Kumar Yadav. Surya. Lovely. Now you've got to tell me about all those shots that you've played. We've spoken about it before as well. Now, are those predetermined or those instinctive? Some of them are obviously predetermined because I feel this format is all about what you think and how you prepare when you go into bat. So most of them are, but at the same time, you got to be staying in the present as well. Or like it seemed like you were batting tonight on an absolutely different pitch because it seemed a little tricky, that pitch. So talk us through, what did you do differently? I felt it was a little slow the way I was watching it from outside, but my plan was really clear at that situation. My role was to go in and take the tempo up and just express myself, and I've just loved it. Rohit just mentioned about flexibility. We've seen you bat at number 5, 4, even at 3, even opened as well. How do you adapt to that, and how do you prepare yourself to be as flexible as that? I think you got to be flexible, as you rightly said. You should be equipped to bat at any number, and I have opened as well, batted at 3, and at all numbers when I have played for different franchises. So I really love and enjoy it. Well, we enjoyed it as well. Thanks for all the excitement. All the very best for this tournament, and hope to see innings like that from you again. Thanks so much. Thank you, Surya. Very true. Thank you, Surya, for giving us that treat with 4 sixes, or 6 sixes, 6 fours, and 68 runs he has made out of 26 balls. So I think quite commendable. We all are happy about it. But what next? Yeah, I think he has to be consistent now, and Yeah. इन्होंने जो है अपना स्टैंडर्ड जो है एक सेट किया है, अब उसको मेंटेन करना एंड कंसिस्टेंट रहना, एंड ही हैज़ बीन डूइंग वेल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. और आज भी देखें जो इनिंग हमें लग रहा था 160 170 पहुंचेगी, इंडियन टीम उसको 190 के पार पहुंचाया. और आई थिंक इनको श्रेय जाता है जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरा ग्राइंड होके आए आई वुड से. मुंबई से खेलते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से परफॉर्म करते रहे हैं. आईपीएल में ही हैज़ बीन डूइंग सो वेल, एंड आई एम रियली हैप्पी कि जब कोई प्लेयर इतना पक्के आता है, इतनी मेहनत के बाद आता है, एंड ही हैज़ बीन डूइंग सो वेल एट इंटरनेशनल क्रिकेट. कृष्ण स्वामी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक B2 और A2 डिसाइड नहीं हुआ है. जो 2 मैच आने वाले हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका का, और हांगकांग और पाकिस्तान का. अभी पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई नहीं किया सुपर 4 के लिए. क्या आप दोनों मैचों में किस तरह से देखते हैं? क्या वो सेमीफाइनल, वर्चुअल सेमीफाइनल मैचेस हैं? देखिए ऐसा है कि आई थिंक फॉर से टीम्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, दे हैव टू बी रेडी टू प्ले एनी टीम, बट फॉर द अदर्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द सुपर 4 एनी विच वे. So I think at the end of the day, it really, there is no point in trying to speculate as to who's going to finish top and second, because both Pakistan and India are expected to, top the respective pools kind of thing. So I would say that, I honestly don't pay too much attention to that, because I feel that if you need to win a tournament, you have to be ready to beat everybody. And I guess for Sri Lanka and Bangladesh, that's going to be a do and die match. I mean, whosoever wins, that's going to get They through. don't care who they win against. They just Yeah. want to win. Of course, everybody's playing for a win only. But again, bottom line is, we all know this is a T20 format for a reason, because it was decided now upcoming T20 World Cup would be impacted quite a lot by the players who are going to be trained out of these kind of tournaments. So again, the challenge would remain with most of the team, that is this the team which they would feel that is mostly ready for World Cup, or we have to still do a lot of trial and we have to go through a lot of turbulations. But right now we have callers with us, so let's just say hello. Hi, good evening, and first of all, many congratulations to all of you, Thank you. Good including evening. whole nation. This is Azam from New Delhi once again. Hi Azam. Yes, we spoke before and you had 3 questions if I remember correctly. Rightly. Now I have 2-3 suggestions. Now I'm not with the question because everything went in the right direction. Yes. Yes, there are some areas that have to be improved. It actually, in life it happens. There is every chance to improve. Absolutely. So India will definitely improve by the time goes.
Now, I have a suggestion that the radio should remain radio. You people are trying to make it a little bit of like a television, which is something unexpected. I have been listening commentary since very long time. So what happened at the time of finishing the match? There was a brief analysis, which you people have cut down, which is not good idea. We are totally blind, visually impaired person. Okay. So it becomes difficult to understand what went wrong and what went right. Okay. The commentary should be as it was, happening in 2003 or 7 World Cup. And second thing is that there should be live commentary from the ground, not from the studio, because the experience doesn't feel good. आप अगर पहले कुछ सुनो और उसके बाद कुछ और सुनो, it doesn't feel good. Now, the third and you can say suggestion and question as well. This you can turn it as question too. It's to Ratra sir. Does he see any changes in Indian team for the upcoming matches against Bangladesh or any other team? Does he see any changes? So, before I took your call, this is the exact thing I just asked our experts. So we would talk about it further. And for rest of the questions, I think things are which are not in our control. Talking about, doing live commentary from the ground, that we really can't confirm right now. But the suggestion which you have given for our commentators and us as presenters, we would definitely make a note of it. And I'm pretty much hopeful, and I would like to assure you, you would not have any complaint in future. Thank you. एक कॉलर है हमारे साथ. हेलो. हाँ जी, आदाब. हाँ, आदाब सर. जी, मुस्तक मुत्ता बात कर रहा हूँ भुज गुजरात से. हाँ जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत. धन्यवाद सर. सर, आज हमारी टीम जीती, हमें बहुत खुशी है. भले कमजोर टीम थी, लेकिन जीत होती है. बहुत शानदार खेले. और ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये जो टीम हमारे बोर्ड ने उतरी बिल्कुल सही टीम है. कभी किसी का फॉर्म होता है, कभी किसी का नहीं होता है. बहुत जबरदस्त टीम है. हमें उम्मीद है कि एशिया कप हम ही लेंगे. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. हमें भी यही उम्मीद है कि एशिया कप हमारे हाथ में आएगा. लेकिन जैसा कि आपने कहा, हर एक का दिन होता है कभी, और कई बार परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी होती हैं कि जो उभरने में थोड़ा टाइम लेती हैं, और उसी कारणवश सभी लोग काफ़ी स्पेकुलेशंस करते हैं. सो स्वामी, नाउ आई विल कम टू यू बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी आई थिंक लिटिल लेंदी कॉन्वर्सेशन बिकॉज lots of questions which are on the teams. So I'm going to particularly talk about Indian team because that's what is most asked. So this, as I was asking before, is not the confirmed team yet. But what all are the improvement areas, and name the players who are callers who are calling in. They would have some respite that, okay, we have the players in hand so we can really maybe switch them. See, I would say that you're certainly not going to get to the team. I've already mentioned this. You're certainly not going to get to the team that you're going to take to Australia in a hurry. This series, this tournament, which is only halfway through, you still have quite a few more matches to come. So you will get to see a few more ups and downs in performances. Then you have a couple of short series again, which are coming up before the World Cup. So I think this, I won't say cut and chop, but I would say this process of experimentation and trying out various people and then waiting for some of the seniors to come back from injury or from rest, because the World Cup is a big engagement, and I think no captain, no team management, no country wants to send a team which is even 98%. They want to send it as 101%. So you don't want any breakdowns there. You don't want to take any chances there. So you will have to have everybody who's 100% fit. So I would say there are a lot of people who have yet to come back. You've got Bumrah, for example. I mean, absolutely. I'm sure everybody's waiting for him. You've got a couple of other senior pacers who will come back into the team. So I think I'm still waiting for Ashwin to play, because I think I would put Ashwin into the 15 when you go for the World Cup. You need some experience out there. And as for the batsmen, we've got a lot of batsmen. So we need to see who we need to take and who we need to keep back. A few young pace bowlers have been given a chance. Well, hopefully they will click in the next couple of matches. Well, surely we have to wait and watch, but right now we don't have to wait anymore, because I know that we all are happy and quite satisfied by the performance which was done by Indian team today. But we have a lot more matches and games to be seen. So प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा. हम भी बहुत खुश हैं इस वक्त कि भारत ने क्वालिफाई कर लिया है, और आने वाले मैचेस भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं. और जैसा कि स्वामी ने बताया कि अभी भारत को थोड़े एक्सपेरिमेंट्स और करने होंगे,
क्योंकि जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी वो 100% से ज़्यादा फिट होनी चाहिए, 100% से ज़्यादा टीम तैयार होनी चाहिए। हम बिल्कुल तैयार हैं हम अजय, थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार हैं। स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Just hope to see you very, very soon in the studio again. I know very, very is not the right thing to say, but this is just out of excitement we say. So very soon we are going to see you in the studio. Forgive it. Thank you. I was looking for that nod. So this is Gitanjali Soni and Praveen and all our team here saying thank you so much for joining us.